Hello, 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 everyone. Good morning, afternoon, evening. Hope you're doing well. Hope you're staying safe, you're staying healthy. And this will just be a screen space of Twitter space. That's how it is. You'll not be able to see anyone. I will try to share the screen, but we'll have Krantiji join this session and then we'll get started. So I'm going to be on the screen. Varun, are you there? Yes. Hello, hello, hello. Hi, so, hey, Varun, good morning. Good morning. Just a quick question. Are we taking listeners or we'll just first take Kranti ji and then let her speak and then we'll take the yes, speakers? Yes, that's okay. How it will be. Okay. Kranti ji is here. I see her. So I'll invite her. I see her. Absolutely. Thank you. All right. So, guys, Kranti ji is here. Good morning, afternoon, evening. Basically, what we are going to do is we will hear Kranti ji first, for sure. पहले हम उनसे बात करेंगे, उनको सुनेंगे, what's going on, anything that we can do, anything that we can help her with. That's going to be the thing. Namaste. Welcome, Kranti ji. Namaste, namaste. I'm traveling right now, so you might hear a lot of horns and everything. So just pardon me. No worries. Yeah. So thank you everybody who's present here, and it is a tough time, yes, but thankfully, slow and steadily, this case is getting solved, and people who have actually died, who have concocted, and who have been trying to frame Mr. Sameer Wankhede, they will be slowly exposed. And now that Sam D'Souza is also out with his statement where he says that NCB officials are not corrupt, it actually clears a lot of things. And there is a lot of damage that has been done by Mr. Nawab Malik. And it is really painful to see Sameer suffer like this because, one might get accused of many things, but when you're accused of something that you've never ever done in your life, that hurts the most. And I think because of his revenge of his son-in-law and etc., he just wanted to hit Sameer where it hurts the most, and that's what he did. But he will not be successful in doing that because we are all here to support him. Yes, he has been successful in creating doubt in minds of people. Not us, of course, because we are 100 and 200% sure that Sameer is innocent and he can never do something like that. But yes, in normal public's minds, he has made people think because of his dirt, whatever he's spreading throughout the media. But even that will be cleansed because Sameer is very efficiently sitting in front of the SIT or the vigilance team that has come through these NCB people, which has come from Delhi. So he has faced all the questions properly, he's answered everything properly, and that's why he's still on the case. But of course, there is Prabhakar Sel who's missing still, and that makes everybody think what happened to him. The SIT in Mumbai is also simultaneously investigating. Let's see what happens with that. Also, I'm sure they won't find any proofs against Sameer, and only if the Nawab Malik gang plans to plant something, only then there can be something. But I'm sure within now, whatever is happening with Nawab Malik tweeting about Mruda Fadnavis and everything, I don't think now the situation will be favorable for these. I'm sorry to use this word, but little bit they're very sinister people, extremely sinister actually, to be successful in planting anything right now. So we are hoping and praying that this investigation is also carried out in a very fair manner. And even if Mumbai police is doing it, they should be neutral and they should be extremely fair in all this. What we have to do is we have to be extremely positive. Number two, we have to be very vigilant on social media. If we see anybody typing, derogatory statements about Sameer, clear them out. I'm not saying troll them, no, but put the facts forward. If there is somebody who's saying that, that Sameer is involved in extortion, what proofs do they have?
Whatever proofs we have that has already come in the media, we can show them that. Or I'm not saying give explanation, no, but at least make them make them keep their mouth shut by stating facts. So all these steps we have to take. Then we have to also be very active on social media and promote things that are false. Like false in the sense, people who are falsely framing Sameer. If we find some evidence about them which somebody else is also putting, like there are a lot of handles which are exposing these people, which are totally exposing these people. If we don't want to comment on them, we can at least retweet them and make it reach a lot of people. So we have to be very alert and we have to take this moment forward. I'll try to meet you people on this space very often. We can talk, we can discuss, and the main agenda at the bottom of everybody's heart is that to make India a better place. We all care for our nation first, and our nation should always come first. I'm going to be here for some time now, at least for 10-15 minutes. In case if anybody has any questions or something like that, you guys can just go ahead and ask. At the same time, I just want to say that Sameer is hanging in there. He's also fighting it out. We are all fighting out as a family. It is very painful for all of us. But just to share an anecdote, I had just gone to have some snacks at an eatery, and there was one woman who actually came up to me and she saluted. She had tears in her eyes. So here we get to see what is the pulse of the nation, what people are actually feeling about Sameer. So I think we are doing good. We should not be disheartened, and we should keep supporting our nation and also Sameer Wankhede. Thank you. Absolutely, very wonderfully said and very well put, Kranti ji. एक चीज मैं जरूर बोलूंगा. I think that salute that you got is just a representation of how we all feel. So whosoever that person was, उन्होंने हमें ही represent किया है, because we all are standing and we all, I know on this space you can't see it, but the feeling is mutual. We are very proud of Sameer ji. And one of the questions which I will start off with, you've already touched upon it, but मैं एक बार फिर भी पूछूंगा. We all are a little worried about ये एक तरह का useless, meaningless stress है for anybody. If anybody is actually pointed out, or personal ऐसी कोई चीजें होती हैं, to anybody this becomes a little bit of more of a stress. How is Sameer ji overall doing? And the second follow up would be, he's a very focused officer. I mean, he's focused on his work. So is this in any way impacting what he was actually doing? Yeah. Is he just ignoring it and, taking it day by day? How's it going? Sameer is definitely stressful. Now he has meetings like where he has to discuss and his religion and everything. So I'm saying is that he has been made busy by these people. Exactly what they wanted. Exactly they wanted is Sameer to not reach or to the root of what the problems are. The drug problems are. His raids should stop. His raids should not take place in their area so that they will get exposed. All these things they wanted, and yes, it is happening right like that right now, because he's getting very busy proving himself innocent. And this is the saddest truth, and this is the saddest or darkest truth that we are facing today. And we people who are all supportive of him carrying out all those operations, we are all feeling so bad over here that he can't work, and instead of working, he's busy proving his innocence. So, but I feel that this is a phase, and Sameer also keeps telling me, yes, this is a phase. These attacks will automatically stop now, because I'm sure there is some action that will take place against him, because I think Nawab Malik ji has rubbed a lot of people on the wrong shoulders. So I think somewhere or the other, everything will come together and chase him down. So I feel that it's just a matter of time. We'll sail through this. Absolutely. And one last, because I really want people to be able to share their love support with you. So
I'll definitely get more questions from the people and let them share their views. But one last thing, of course, this is a personal attack on Sameer Wankhede and an honest officer. But Sameer Wankhede also represents a team. The entire NCB team. So, what is the stand right now? If you can share, I mean, I leave it up to you. Okay, what is the stand of NCB team and the officers who kind of work with him for him around multiple cases? तो उनका क्या stand है इस time पे around what is happening? I can't tell you in words how they're feeling. I meet them every day. I am with them all every day. Even my person who is driving my car is also an NCP official. The seniors are, yes, they're supportive. They're worried for him. More importantly, they're worried for Sameer. They try to direct him in every right way possible. See, in the end now, when it is uniform force, they always stand by each other. कम वॉट में, मतलब आप हमारे बंदे को नहीं बोल सकते हो, वैसा एक सीन हो जाता है. तो एंड स्पेशली जब वो बंदा सही हो तब तो वो खड़े रहेंगे ही रहेंगे. तो थैंकफुली यस, ऑल द सीनियर्स आर स्टैंडिंग बाय हिम. दे आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव. दे आर एक्सट्रीमली because most importantly they know that they have nothing to hide. They have nothing to cover up. So hence they are very supportive. If they knew now Sameer is wrong, so probably they would have not been so supportive. But yes, they're supportive now. And about his contemporaries, they are also cheering him on. They are extremely positive. They are worried for him also. They keep telling him, Sameer, ye kar, Sam, aise kar. This and that. The juniors are the ones that I feel for the most, because see, Sameer has a commando team. So these are all CISF Jawab, people who have fought on the border. And these are all commandos. They are especially they've got over here for carrying out these deadly operations, because they have to fight Nigerians, they have to fight these big goons, they have to fight. You never know, once you go for an operation, people might hit you with stones or talwars, or they might stab you, they might shoot you. So hence, these are all these efficient soldiers who are with Sameer, and now they are just sitting hands on hand, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ है नहीं, ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, उनके बॉस के साथ ये ह्यूमिलिएशन हो रहा है, वो लोग नहीं सहन कर पा रहे ये सब. उनकी आंखों में हर वक्त पानी होता है जब मुझे देखते हैं वो लोग लड़ते हुए अकेले. एंड दे लाइक हमारे मैडम को हम कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, बट in the end, when they meet me, like, madam, he sampna, देखिए, tell me in Marathi, this is going to get over soon, and they are going to get Nawab Malik, so there is that morale goes low. I keep boosting them, but they are there. ऐसे तुम लोग ऐसे चेहरे लटकाओगे तो समीर जी भी बहुत दुखी होंगे. Guys have to charge up. You have to help. Be positive in front of him. मुंह लटका के मत रहो सब लोग. So then they buck up, and now we're just hoping and waiting for everything to get over. Perfect. Thank you. That is so encouraging and that is so positive. हम यही जानना चाहते थे. I know it is not very, very easy for anybody to handle. But, having looked at Sameer, how strong he appears mentally, how he approaches everything, we were sure that, he is really, really, taking it in the right stride. I'm going to let others also come and speak to you. So I'm going to start with you, Sonal. Please go ahead. And uske baad we'll start with others. Yeah, thank you, Varun, and thank you, Kranti ji, for sharing. What you just shared also brought tears to my eyes. I just want to say, I think Varun said everything that we wanted to say. That we are here with you, with your fight each and every step of the way, and we will win. And I also want to say we have a lot of speakers, so I want to say, please do keep it short. Once you've spoken, maybe go to the listener mode so we can add more, and let's keep this respectful. Thanks so much. And one by one, we'll add the speakers. Yeah. But Nagesh ji, please go ahead. Nagesh ji, बोले आप म्यूट पे हैं. Okay, Nageshi. Okay, all right. Hello. Yes, please go ahead. जी आप सभी को नमस्कार. जैसे मैं अभी क्रांति जी की बातों को सुन रहा था, मैंने टीवी चैनल पे देखा क्रांति जी आरपीआई के जो अध्यक्ष हैं रामदास आठवले जी के पास भी गए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. आज मुझे क्रांति जी, आपको भी अच्छा लगा होगा कि आज नवाब मलिक ने सीधा
देवेंद्र फडणवीस जी की वाइफ को लेकर जो फोटो डालकर उन्होंने कमेंट किया, वो 4 साल पहले की एक फोटो निकाला उन्होंने, और उस फोटो को डाल के उन्होंने क्या किया कि ये ड्रग्स पैडलर है, और इसके साथ डायरेक्टली जो है देवेंद्र फडणवीस की वाइफ के साथ, और जबकि देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो जो व्यक्ति है वह किसी के थ्रू किसी काम को लेकर उनके पास आया था, और उसके बाद नवाब मलिक ने कई चीजें कही हैं। अब सीधा सीधा जो है, अब उसने देवेंद्र फडणवीस जी से भी एक तरीके से कहें तो लोहा मोल ले लिया है। तो वो कहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम नेता थे आजम खान, वह कभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़े हमला करते थे और आज वो जेल में बंद है। तो मुझे लग रहा है कि आज नवाब मलिक का एक पैर टूटा है। उनके मित्र आरिफ नसीम खान जो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आज एक लेडी ने उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया है और उनको कल पुलिस अरेस्ट करने वाली है। वह नसीम खान के बहुत ही खास थे। और अब आप सोचिए कि नवाब मलिक के खिलाफ इतने सबूत आ गए उन्होंने कल कबूल कर लिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके दामाद के ऊपर 2000 करोड़ की हेरा फेरी की जो है केस चल रही है, और उस केस की जांच जो है वो खुद ईडी कर रही है। कल उन्होंने कबूला, इसके पहले वो कभी कबूलते ही नहीं थे कि ईडी की जांच उनके किसी भी दस्तावेज किसी चीजों के लिए चल रही है, तो उन्होंने कबूल कर लिया। और मोहित भारती जी ने कहा है कि बहुत सारे सबूत आए दिन वो भेज रहे हैं, जैसे भी ये 2000 करोड़ की बात हुई, ऐसे ही उनके दामाद का एक लड़की के साथ जो एक मुस्लिम वुमेन है उसके साथ उनके सेक्स के कुछ वीडियोस कुछ फोटोज ऐसे जो है लीक हो गए हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें उनके दामाद सीधा सीधा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और 14 ड्रग पैडलर के साथ उन्होंने एक मीटिंग की थी दुबई में, उसकी भी कुछ फुटेज जो है वो डायरेक्टली मोहित भारती जी के पास आई है। और उन्होंने आज देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात की, और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि यह सारी जो चीज है हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेज हम लोग जो है वहां जज के सामने रखेंगे, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं अब आप समझ लीजिए जो ड्रग पेडलर को पकड़ के जेल में बंद कर रहे थे, और मुंबई ही नहीं पूरे देश से इस गंदगी को दूर कर रहे थे। जिस प्रकार से उनके ऊपर इतने गंदे चीजों के आरोप लगाए गए कि वह खुद पैसा मांगना, ये दुनिया भर की जो चीजें नवाब मलिक ने अपनी मनगढ़ंत कहानी को रचा है एक रचनाकार की तरह। अब उनकी जो कहानी है वह कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके अलग अलग टीवी चैनलों में चल रही है। और एक अनिल वैभव पारब करके एबीपी माझा के एक पत्रकार ने एक सबूत दिए, कुछ उन्होंने लिख के अपने शेयर किया था, तो कुछ नवाब मलिक के लोगों ने उन्हें धमकी दी कि तुम एक पत्रकार हो, तुम कैसे शमीर वहां की तरह जो हमारे देश से वह इस ड्रग्स और जो नशीले पदार्थ उनको गायब कर रहे हैं, जिनको पकड़ रहे हैं वो, तो हम उनके साथ हमेशा खड़े थे। आज एक पत्रकारों की भी जो टीम है ना वह कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जी के साथ है। तो हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना वो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है और अपने देश के साथ खड़ी है, और अपने सच्चे वीर देश के वीर योद्धा के साथ खड़ी है। तो हम लोग अब डरते नहीं है, अब हम सीधा लड़ाई लेते हैं। अब नवाब मलिक जी को पता है अब कि जो चीज वो कहेंगे वो झूठ कहेंगे, तो उनकी झूठ की जो पर्दा कहीं ना कहीं हमने खोलना चालू किया है। मुझे लगता है मैंने आज भी मोहित भारती जी को कहा कि आपके पास जो सबूत है उनके खिलाफ उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने लाइए, जिससे उनके घर का उनके परिवार का पूरा पोल पट्टी खुलना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए एक व्यक्ति जो कुर्ला वेस्ट में रहकर कचरा सेठ नाम से फेमस हुआ, कचरे का धंधा करके उसकी पूरी फैमिली कचरे का धंधा करती है, और वह व्यक्ति उस समय आप सोचिए 16 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकता था। जो इनोवा क्रिस्टा गाड़ी जो 16-17 लाख की गाड़ी आती है वह कार नहीं खरीद सकता था। मारुति 800 में घूमने वाला व्यक्ति कैसे आज 2000 से 3000 करोड़ का मालिक हो गया, इसकी नगेश जी आपकी आवाज, आपका नेटवर्क शायद बंद हो गया। आई डोंट नो गाइस इफ यू कैन हियर। हाँ, he's back. Yeah, I can't hear either. He's back. हेलो
हाँ नागेश जी, आपका नेटवर्क कट रहा है। मैं आपसे 10 मिनट बाद ज्वाइन होता हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है, मैं अभी ट्रैवलिंग कर श्योर रहा हूँ, इसके लिए नहीं पा रहा हूँ। श्योर, नो वरीज, थैंक यू सो मच। जी। ऑलराइट गाइस, लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। दिनेश जी, प्लीज गो अहेड। हाय क्रांति मैम। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे आया हूँ, सिर्फ एक चीज बोलने के लिए अपना साइड देने के आया हूँ कि समीर सर के जैसे ऑफिसर के लिए हम जैसे यंगस्टर्स बिल्कुल आगे खड़े हैं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। एक बार हमने गलती करके देख ली, अब उस गलती को दोबारा दोहराएंगे नहीं। और समीर सर की तरह अगर 10 ऑफिसर्स भी आगे आएंगे तो हम उन सब 10 ऑफिसर्स के पीछे खड़े रहेंगे, उनके लिए अपनी आवाज उठाएंगे। हमारे से एज अ नॉर्मल, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे से जो बन पड़ता है हम वो करने की पूरी पूरी हिम्मत दिखाएंगे। थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। And Kranti ji sun rahi hain, and I would, whenever she wants to jump in, she will speak, but let's all keep it short and sweet. Shweta, please go ahead. Is anyone able to hear? Yeah, Sonal. Shweta, please go Hello, ahead. good evening everyone, and जय हिंद मैम। सो मेरा बस यही मैसेज है आपके लिए, फैमिली के लिए, समीर सर के लिए, कि हिम्मत नहीं हारना है, ऐसे ही चलते जाना है। एंड वी आर योर छोटी सी एसएसआर फैमिली है, आर्मी है यहाँ पे लगी हुई है, सिविल ड्रेस में हम लोग लगे हुए हैं, अडिग लगे हुए हैं, हटेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और अपना जो मोर्चा है हम संभाले बैठे हैं। जो ऑफिशियली जो चीजें वहां हो रही है, समीर सर प्लीज हिम्मत से करें। आप एक टाइग्रेस की तरह एक रॉक सॉलिड सपोर्ट जैसी वहां खड़ी है, साथ में हम आपके पीछे खड़े हैं मैम। बस यही कहना था। एंड वी आर जस्ट देयर फॉर यू एंड द फैमिली। मोर पावर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू श्वेता। मैं इस पे सिर्फ इतना बोलूंगा, और आई डोंट हैव टू टेल दिस टू क्रांति जी और टू समीर, बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जो आपने बोला श्वेता, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। वी आर आर्मी, एक बहुत बड़ी आर्मी है, जो सोशल मीडिया पे और सोशली जितना भी अटैक हो रहे हैं समीर पे या फैमिली पे, ऑल वी आर गोना डू इज वी आर गोना हैंडल इट। जैसे क्रांति जी ने भी बोला कि हम सोशल मीडिया पे इस चीज को अपने लेवल पे हम हैंडल कर रहे हैं। हाँ, अगर हमसे कुछ होता है, कुछ गलत होता है या कुछ, आई एम प्रिटी श्योर क्रांति जी हैं, समीर सर हिमसेल्फ, ही विल करेक्ट अस। हालांकि हम लोग कोशिश तो पूरा कर रहे हैं कि वी मेंटेन आर, वो कहते हैं ना, डिग्निटी, एंड वी रिस्पेक्ट एवरीवन, but we will definitely handle all the trollers, all the haters, जहां पर भी हैं, और हम लोग हटेंगे नहीं। अटिक जैसे आपने कहा, that's how we are and that's how we will always be. Yes, thanks for it. So thank you Shweta. All right, please go ahead, और जो लोग बोल चुके हैं guys, one by one, please make yourself as the listener so that we can have more people. All right, Judy ji, please go ahead. Yeah, hi. Thanks, Varun. Hello, Kranti ji. Just wanted to tell you that again, that we don't have anything much, but we have the power of each one of you supporting you and your family. My children themselves come from a family from different religion and different culture from two different parents, and I won't give that right to anybody to decide which religion or which culture my children will follow. Saying this, also we have seen what has happened to Sushant Singh, what has happened to Arnab in that same city of Mumbai. So we have our doubts, we have our fears of what they can and they cannot do to you and your family. So we just want you to be cautious, and we know that the saying is मगरमच्छ में पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं रहते. You have always been so respectful, and the way, not only you, your family, to everybody whom you have spoken as of now on media. But please be cautious. Please, we know you're taking a cautious. Please tell Sameer sir to be cautious and not to trust any of these people who are there. That's what I want to say, because we have our serious doubts with everybody over there, and we just want you and your family to be safe, and we are there with you. Satyamev Jayadev ma'am, take care.
Beautifully said. Beautifully said. Thank you. All right, Kranti ji acknowledging as well. All right, Saloni ji, please go ahead. Jai Shri Ram, Kranti ji. We salute you and your family, and of course, first of all, we salute Sameer sir. And हम उनके साथ हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे. हम उनकी शील्ड हैं, हम उनके वॉरियर्स हैं. जैसे हम SSR वॉरियर्स हैं, उसी तरह से हम समीर सर के वॉरियर्स हैं. जो इंसान अपने देश के लिए एक नेक काम करने जा रहा है, हम उसके साथ हमेशा रहेंगे. सेकेंडली, आज मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि फडणवीस जी जो है वो आज निकल के आए जब उनके ऊपर बात आई है. जब तक समीर सर के बारे में सब कुछ हो रहा था, तब वो उन्होंने एक शब्द नहीं आगे बोला, जो कि बहुत दुखदाई हम लोग को, मेरे को तो एटलीस्ट पर्सनली बहुत दुख हुआ इस बात का कि आज आपके ऊपर बात आई है तो आप कह रहे हैं. और अगर आपको इतना सब मालूम था तो आप इतने सालों से चुप क्यों बैठे थे? आपको क्या देश का ध्यान नहीं है? देश की हित के बारे में आप नहीं सोचते हैं? आप सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने में लगे हैं. ये बस मेरा कहना था. बाकी we are all with you and the whole family and will salute you and your family. Thank you. All right, thank you, Saloni ji. Kranti ji, if you can, maybe एक ये भी question था और मैं I want to take this opportunity. Do you want to say a little bit about ये जो फडणवीस जी ने आज statement दी है and the way it is going? What is your take on it and how do you see it, or how does the family see Devendra ji ka is statements ka, how would it translate, or how would it help? एक्चुअली जैसे उन्होंने कहा कि यस, अभी तक कोई हमारे साथ में नहीं आया था, एंड आई थिंक ओनली वोकली शायद सिर्फ आठवले जी ने कहा था और किरीट सोमैया जी ने कहा था कि वो समीर वानखेड़े के साथ हैं. बट देवेंद्र जी ओपनली खुल के, हाँ, वो ऐसे कमेंट्स करते थे कि नवाब जी के पास कोई टाइम नहीं है, वो उनके पास बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है. वो ऐसे ही कमेंट्स करते रहते हैं, ये वो, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे उन्होंने कमेंट्स किए थे. लेकिन ओपन सपोर्ट नहीं आया था, जो आज के उनके नवाब मलिक के ट्वीट के बाद जरूर आया. उन्होंने डाला भी पूरा सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि अभी वो नवाब मलिक को एक्सपोज करेंगे. देखिए, हमें उन्होंने पहले नहीं किया सपोर्ट, यस, बुरा लगा, सबको बुरा लगा. लेकिन अभी अगर है सपोर्ट तो इससे बहुत सारी चीजें अपने लिए आसान हो जाएंगी. इधर फिर भी मैं वापस ये दोहराना चाहती हूँ कि अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी है. मतलब कल को वो इनको सबक सिखा देंगे नवाब मलिक को, लेकिन समीर की जो लड़ाई है वो उन्हें खुद ही लड़नी है. मतलब जो भी है, अभी खुद को इनोसेंट प्रूव करना, उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट का उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, उधर जाके अपनी ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट सब बता के हर चीज को क्लीन चिट लेना, ये सारी लड़ाई, मतलब ये यूजलेस लड़ाई है. मेरा कहना है लड़ाई लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूजलेस लड़ाई है ना. मतलब हर एक इंसान की विजिलेंस की चेक होती है बिफोर दे गेट ए यूपीएससी सीट, बिफोर दे आर पोस्टेड इन सम प्लेस. उनकी प्रॉपर विजिलेंस होती है, और विजिलेंस को आप ये नहीं बना सकते, आप मूर्ख नहीं बना सकते. एक पूरी टीम होती है जो आपके हर दस्तावेज को चेक करती है. तो आज की डेट में अगर ये लोग उसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो पूरे यूपीएससी के सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लड़ाई हम लड़ लेंगे. ये भी जो भी प्रूफ करना है कर लेंगे, क्योंकि क्या है, पेपर्स ही दिखाने हैं, प्रूव ही करना है हर चीज. ठीक है, वो भी कर लेंगे. लेकिन यस, देवेंद्र जी के आज के ये स्टेटमेंट से हमें बहुत ही ज्यादा मनोबल मिला, बहुत ज्यादा हमें ये चीज का अंदाजा या ज्यादा आइडिया आई कि बाबा हम अभी अकेले नहीं है, कोई ना कोई है जो इतना, मतलब एक बड़ी व्यक्ति है जो इस चीज से हर्ट हुई है. और मेरी तो समझ में एक नहीं आता कि नवाबी सबकी बीवियों के और औरतों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं. व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? मतलब इंसान प्रॉब्लम है तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके सब केस फाइल करो, कुछ तो करो. ये ट्विटर बाजी करके औरतों के फोटो डाल के, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. वो मेरे समझ के परे है. मतलब आपको दूसरों के घरों की इज्जत पे ही हाथ डालना है.
ये जैसे आज बोला ना देवेंद्र जी ने कि उनकी मानसिकता पता चलती है, लेकिन वो देवेंद्र जी बहुत बड़े इंसान है, बहुत पावरफुल पोजीशन में है। आज वो अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें पहले ही ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारा साथ दिया नहीं दिया, क्या कि ठीक है नहीं दिया, अब दे रहे हैं तो चलो अब हम इसका मैक्सिमम, हमें इसका फायदा होना चाहिए। और हमारी जो जंग थी उसमें एक और बहुत ही बड़ा व्यक्ति ज्वाइन हुआ है और हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। सो वी आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट दिस हैपनिंग. And now that Sam D'Souza has also come out saying that NCB officers have never demanded money, they are not corrupt. So we are on the winning streak. We are on the winning path right now. Just it's a matter of time now. Perfect. Thank you for clarifying. All right, guys. Like I said, keep it short and sweet. Sachin, please go ahead. क्रांति जी, पहले जय श्री राम। मैं एक छोटा सा कविता पढ़ देता हूँ हमारे सभी के लिए। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ी दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल देते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हौसले हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले है। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी थे। तो मैं क्रांति जी, आपकी तरफ से मैं समीर जी को धन्यवाद बोलता हूँ। और हमारे लिए करंटली मॉडल छत्रपति शिवाजी की अंश अगर हमें दिखता है तो समीर जी ने दिखता है। तो हमारा पूरा सपोर्ट उनके लिए रहेगा और हम उनके कोई भी आपत्ति हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली परफेक्ट। गाइस जो बोल नहीं रहे, प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें। वी विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, अबे भाई प्लीज गो अहेड। Am I audible? Yes, you are. Please go ahead. हम सबका साथ है समीर सर के साथ। क्रांति जी, आप किसी भी तरह की टेंशन ना लें। नवाब मलिक का जो एजेंडा है वो हम सबको बताया कि अभी ये राजनीतिक एजेंडा है और इसने बीजेपी पर अपना निशाना करके ये चीज सिद्ध कर दी है कि भाई समीर सर तो केवल बहाना था, इसको तो अपना निशाना बीजेपी और राजनीति के लिए लगाना था। आप ग्राउंड लेवल पर इस चीज को जारी रखिए, हम ऑनलाइन इस जंग को जारी रखेंगे। यही मुझे बोलना था। हमारा सबका सपोर्ट है आपके साथ। Thank you, Abhay bhai. Thank you for keeping it short and sweet. All right, please go ahead, Shalini ji. Just a second, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते क्रांति जी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम लोग समीर सर से और आपसे, आप यास्मीन दीदी से बहुत कुछ सीख रहे हैं और आप लोग एक ट्रू एग्जाम्पल है कि फैमिली किस तरह से स्ट्रांगली बोल्डली खड़ी हो सकती है और खड़ी होनी चाहिए। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ समीर सर। वी कैन फील द पेन, हर्ट एंड वी आर वेरी एंग्री एंड स्केयर्ड टू। मतलब हम लोग को हर रात दिन ऐसा लगता है कि समीर सर जो है, आप और समीर सर हमारा अपना परिवार है आज की डेट में। तो हम लोग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं और हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। आप हमें जानती हैं, हम सब लोगों को जानती हैं कि हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। वी गो बाय आवर ओन ability to see who is right, who is honest. But what a good thing has happened, one good thing which I feel that has happened in all these nasty event and nasty incident, that the scum or the dirt has come out in the public. Now we can clearly say that who are the people who malign the honest officers in the vigilance committee, and how these honest officers are harassed to such a low level. So आप के साथ हम लोग पूरी तरह से हैं।
और आप बिल्कुल भी मत वो कीजिएगा, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं. वी आर वेरी प्राउड ऑफ. एंड फॉर मलिक आई कैन जस्ट से दैट विनाश काले विपरीत बुद्धि, ही इज जस्ट जलती हुई मोमबत्ती जो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाती है. सो डेफिनेटली उसका काम थोड़े दिन में दिखेगा हम लोगों को. एंड वही कहूंगी बस क्रांति जी. नमस्ते. Thank you, thank you. All right, please go ahead, Indian Kavita P. Yeah. Hi, Varun. Hello. We met before many times on the call. Yes. क्रांती जी नमस्ते. मी तुम्हाला एक मराठीतला मेसेज सांगायला थांबले एवढ्या वेळापासून. टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही आपल्याकडे माहितीये म्हण आहे. तशी आता समीर सरांची टाकीचे घाव सोसतायत ते, पण त्याच्यातून एक देवपणाच क्रिएट होईल आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. आणि त्याच्यातून दे विल बिकम मोर स्ट्रॉंग, मोर अचिव्हमेंट अँड मोर थिंग्स ही विल डू. ही बिकम ओनली व्हेरी स्ट्रॉंग अँड स्ट्रॉंग अँड स्ट्रॉंग टू शो दॅट if you attack us, you will only break into pieces, but we will more improve. So this is the time and you are not at all alone. आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर आहोत. कुठेही कधीही आम्ही सरांना काही होऊ देणार नाही. Thank you, Varun. Thank you. Everyone wants to same thing and we all are together anytime. Thank you. Balki मैं, thanks to you, I would love Kranti ji also to give a very very strong and subtle message in Marathi as well later. So thank you for speaking in Marathi as well. And मैं एक बार और बता देता हूँ, guys, you can talk to her in whatever language you want. She understands a lot of languages. She speaks a lot of languages. It's not about the language. It is all about the message that we need to convey to the entire Wankhede family, that we stand strong irrespective of what part of the world we are in right now, irrespective of what political affiliation, religious affiliation हमारी है, उसके बावजूद भी we are standing here for an honest officer and his entire family, and we'll continue to support till the very end, because we know who Sameer Wankhede is and what he stands for. So thank you for that beautiful message. All right, Dhananjay, please go ahead. Yeah, hi Varun, thanks for giving me this opportunity. Hello Kranti ma'am. Actually, I don't know, frankly, how to acknowledge or what to ask, right? I was just listening to Kranti ma'am, and I can understand the pain and the stress that Sameer sir and Kranti ma'am and rest of the family member would be going, right? But I will just put my perspective here. Even Malik, right, who is a so-called minister, even he knows that he cannot win this battle. He cannot win this game. He is just trying to derail the investigation somehow. But the good news here is the investigation agency has told that Sameer sir is going to continue with the ongoing investigation. I think this is just a one step of winning for us. Remaining as already everyone has spoke, right? We are just waiting for the day where he will be behind the bar, and I think that day will come very soon, because in Indian history, right, if you see the history has proved that such anti-social element is not long lasting. Definitely they will be behind the bar, or the people will teach him lesson, if not through the justice, right? I am sure Maharashtra people will teach him a lesson very soon. So with this, I will just go on mute, and more power to Sameer sir, Kranti ma'am, to your whole family. If required, definitely legally, we will also step out, and whatever possible activity or possible step which we need to take as a responsible citizen, we will definitely do, either through social media or through physically doing in court, or following by the legal perspective. So thank you so much, and more power to everyone. Thanks everyone. I will be mute myself now. Thanks. Yeah. Thanks, Varun, I want to pass on one message of Warrior who cannot come on the mic. So Anshaj is here, and he's saying for Kranti ji that him and his kids love Sameer Wankhede ji, and they are standing with you. So Kranti ji, I'm just passing the message from Anshaj. Actually, Sonal, I think Warriors is here. So let's hear Warriors. Please go ahead. Hey Kranti and Sameer, you guys rock.
as it is, Sushant has shown us the light, what is right and what is wrong. And movies में देखते थे ऐसा होता है, but this is real life and we can see what is going on, and this is a message for all the leaders that we all are watching you. We are constantly watching you. Thank you so much and more power to you and your family. थैंक यू फॉर दैट. एक चीज मैं जरूर कहूंगा, मैं कुछ चैट में मैसेजेस पढ़ रहा था, ऑन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बहुत चल रहा है. क्रांति जी, एक मैसेज आपके लिए सिर्फ इतना है कि ये नवाब मलिक जैसे लोगों के लिए सिर्फ आपका नाम ही काफी है. नाम में ही क्रांति है. सो इट्स इनफ फॉर देम टू feel the heat. So thank you for standing so strongly. I know you don't have to be told, ye to aap kar rahi hain as your moral responsibility, but the way you have handled this situation and the way you have, so while we are all appreciative and supportive of Sameer, everybody around here, chahe yahan par chahe other platforms pe, everybody feels the way you have handled the entire situation, the way you have spoken, the way you have represented Sameer. I think that is hats off to you as well for keeping that with two, or with small kids, with the family, with everything else that you do. uh, the way you have represented Sameer and the way you've spoken for him, is really really very very commendable, and more power to you. So सारे हमारे warriors की तरफ से I just wanted to convey that. Please go ahead, Anuradha ji. Yeah, thank you, Varun. And Kranti ji, I'm really, I can relate with you very well because my husband is also in forces. And he is also like a hardcore, honest person. He's in border security force. So I have seen several things starting from the militancy, or you can say terrorism in Kashmir since the year 1994 till now. He's been posted quite often. Means normally we have 3 years of tenure in each and every place, but he always, he got pushed out of the place because he was, kind of a stumbling block between the money flow between the government and the people who are affected in the Naxal area of Odisha. So he got posted in just 10 months time because that money was actually going for the people's welfare. So I've seen a lot of all these things, not only in militancy, not only in Naxals, but so many other things, as well as in the headquarters here in Delhi also. I've seen people, being hostile towards him because of his honesty. So I can understand your situation very well. But as, the way you're, kind of shielding him, it's very, very commendable. And that is all we can do as forces wife. ये हमें करना बहुत important है because उससे moral down नहीं होता. Because I've never ever asked my husband to ask his senior officers to get himself posted in a very secure place. He never, पहले तो वो सुनते ही नहीं है और मैंने कभी attempt भी नहीं किया. मुझे लगता है कि इस तरह की spirit के लोगों को ना रोकना नहीं चाहिए. कोई तो हो ना जो honesty से आगे बढ़े. कोई तो हो ऐसा. हर कोई तो पॉकेट में पैसा नहीं भरना चाहता है. कुछ लोग एक्चुअली में जॉब करना चाहते हैं, एक्चुअली में अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं. एंड दैट इज व्हाई हम लोग बहुत घूमे यहाँ वहाँ बहुत घूमे. But I'm really proud of him, and I think you also are, and it is showing to the world. It is, people can see how proud you are of your husband. And Sameer Wankhede ji is in my prayers. I practice Buddhism and I say his name in my prayers every day, that he is fully protected and totally safe. Don't worry about him. He'll come out victorious. Thank you. Wonderful. Kranti ji, मैं यहाँ पर एक बार और आपको, I'll ask you to speak. Of course, based on what Anuradha ji said, on a lighter note, I am sure you are now used to this kind of lifestyle. Sameer, the way he is, but on a lighter note again, and this is not to, you can answer, otherwise you can obviously ignore it. But how is that dynamics at home? With Sameer. जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, are there any moments where you feel some, and you say, Sameer, is it really worth it? Sameer, should we do this? Sameer, we should. तो उस तरह की जो interaction है with Sameer, how does a husband and a wife, not as Sameer Wankhede, the NCB zonal director, but as husband and wife, how do you handle this? And especially when it comes to the family as well as kids around. थोड़ा सा अगर if you want to, tell us a little bit about that.
हाय एवरीबॉडी, अनुराधा जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बोला एक सर्विसमैन की वाइफ होने के नाते। मुझे आज एक लेडी ने, किसी ने ट्विटर पे ये लिखा था कि आज आपका मीडिया के ऊपर का गुस्सा देखकर इतना मन को शांति मिल रहा है, ऐसा लग रहा है रिया को जस्टिस मिल गया। एंड उसके बाद मुझे मतलब मेरे को इतना मन किया कि मैं उसको रिप्लाई करूं सेइंग दैट कि एक सर्विसमैन की वाइफ होना ये क्या होता है, मतलब उसका आप कंपैरिजन आप ऐसे इंसान के साथ कर रहे हो जिसके साथ यस उनके साथ मीडिया ट्रायल हुआ, सब हुआ। एक अगर औरत के नाते सोचे तो यस हमको भी बुरा लगता है जो भी है, लेकिन दो लोग, उन दोनों की सिचुएशन इतनी अलग है। मतलब वो नहीं, मैं अभी जो सुन रही हूँ ना उनको, अनुराधा जी को, मैं ये समझ सकती हूँ कि मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स कि एक सर्विसमैन की बीवी, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता था कि रेड्स पे जाते हैं तो पता नहीं अभी आज आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, उनको कितनी चोट लगेगी, क्या होगा, यू नो। सो कभी कभी ये जैसे आपने पूछा ना कि ये सब तुम कर रहे हो, इज इट वर्थ इट, और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मतलब ये उनको पूछना चाहिए मैंने कि ये तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आई हैव नेवर एवर एवर क्वेश्चनड इट because once you're a serviceman's wife, it is assumed that he might miss a movie date, he might miss a family function, he might miss a dinner date, and it is a taken, मतलब इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं होता है कि हाँ तुम बच्चों को लेके जाओ, मैं देखता हूँ, अगर हो सके तो आऊंगा या घर पे मिलता हूँ। It is that easy and comfortable, you know, for us, and we are okay with that. लेकिन जब भी ये सब हो रहा था ना, जब भी एक्सटॉर्शन के चार्जेस, दिस दैट, और ये आदमी पिसता जा रहा था, तभी एक पॉइंट आया था ऐसा, जब सवेरे उठ के एट 5:30, 6 o'clock he had to catch a flight to Delhi because he had to meet his seniors and stuff. I asked him this, all this while, all these things you were doing, you know, इतनी मर के मेरी ये टीम, मेरी वो टीम, इनको नहीं, मुझे सिर्फ बीएसएफ के जवान चाहिए, नहीं मेरा ये ऑपरेशन, मैंने इतना पकड़ा, मैंने इतने लोगों को, नाइजीरियंस को पकड़ा, ये लोग हमारे यूथ को बर्बाद करेंगे, वो तो इज इट वर्थ इट? उसके बाद तुमको मिला क्या मिला तुमको? यही कि लोग एक्सटॉर्शनिस्ट बोल रहे हैं, यही कि हमको सब लोग सोच रहे हैं कि हम रिश्वतखोर है, यही, you know, very calmly at 5:30 in the morning he is telling me कि उनको जो समझना है वो समझ। इस देश के लिए अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, इस देश का एक बच्चा भी मेरे से बचता है, इस देश की एक माँ भी मेरे से खुश होती है, बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसको ड्रग्स की लत से तुमने मुझे बचाया। मेरे को मतलब ऐसे 100 बार एक्सटॉर्शन के चार्जेस, ऐसे 100 बार का ये एक्सपीरियंस मेरे लिए वो चीज को वर्थ इट बना देता है। सो these men na, like how she was saying just now, these servicemen who are honest and non-corrupt, they're made of a different metal altogether. They're very rare breed, because corrupt होना बहुत आसान होता है। शायद आज अगर वो corrupt होते तो हम लोग इन सारे चार्जेस में से जाते भी नहीं। You know what I'm saying? आराम से बैठ रहे होते, मस्त बैठे होते, कुछ टेंशन नहीं होता, या chill life. But नहीं, you know what I'm saying? If they are doing this, it's a different metal altogether. Absolutely. No, I agree. Yes, अनुराधा जी, आप शायद कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, मुझे ये कहना, क्रांति जी आप जो कह रही है ना कि हमारे पास भी पैसे होते हैं, हम भी बहुत कम पोस्टिंग पे बैठे होते हैं, मेरे बच्चे पूछते हैं, बट एट द एंड ऑफ द नाउ दे हैव बिकम लिटिल बिगर एंड दे अंडरस्टैंड कि रात को चैन से सोने के लिए ना अपने मॉरल्स के साथ कभी भी, अपनी वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बेशक आपके अलमारी में बहुत पैसे हो, इनके खुद के बैचमेट्स बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, दे आर इन you know good positions all the while, but मेरे हस्बैंड ने कश्मीर से लेकर नक्सल्स, अभी नक्सल्स एरिया में पोस्टेड है वो, और मुझे नहीं पता कि whether he'll come on Diwali or not. So ये आप जो कह रही हो ना, मतलब I can relate to it 110%, but still हमारे ना अंदर से वो स्पिरिट डाउन नहीं है। स्पिरिट हमारी हमेशा अपराइट रहती कि पापा, बच्चे कहते हैं पापा जैसा ऑफिसर मम्मी बहुत रेयरली होता है, and this is a kind of a biggest reward. मतलब इनको इस बात से, मतलब हमारे लिए ये रिवॉर्ड से ज्यादा कुछ अवार्ड और रिवॉर्ड से ज्यादा कुछ होता ही नहीं। अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं,
तुमको जो बोलना बोलो, doesn't matter to us. हमने कितने बार मैंने सामान खोला पैक किया, कितने बार खोला पैक किया, doesn't matter. उनकी जो values है, उनकी जो कहते ना due to end to death is the motto of BSF. वो नहीं हम खत्म होने देंगे because of petty reasons कि हमको ये इस जगह पे बैठना है या वहां जाना है या ये चाहिए मुझे, nothing like that. और कोई कमी भी नहीं है, कोई कमी नहीं है. We are actually हमारी जो life force है ना, it actually grows every day. When I see him doing his work to the 100% efficiency, so there's no complaints as such. मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूंगा, अनुराधा जी एंड क्रांति जी, both of you and many more, amazing wives of such officers, amazing मैं कहूंगा spouses, क्योंकि it could be other way around. I don't know about others. आप लोगों को यहाँ इस टाइम पे ऐसे बात करके, ऐसे सुन के, I have goosebumps right now कि हम लोग सिर्फ सुन के ही we are feeling so proud. Imagine you're going through that life day in day out, and still the kind of words जो आपके, मैं क्रांति जी से तो obviously on social media and everywhere where I see and hear her, we really feel very proud. But hearing it from you as well, Anuradha ji, and many more people like you, we really are proud of our honest officers, our honest people who are working for our country. Or more power to you, to your families, because सबसे ज्यादा जो sacrifice अगर कोई कर रहा है तो वो आप लोग हैं, more than these people who are on their jobs. I think the kind of lives you guys have, चाहे support करने के लिए, चाहे back end पे बच्चों के साथ, and all that you do, hats off to you and more power to you. And again, thank you for gracing this space and sharing these experiences with all of us. एक question मैं यहाँ पर, just because ये इस तरह है, so एक question आया था, a message maybe also for those young aspiring agents, officers, coming from that experience, Kranti ji, I mean, आप क्या कहेंगी वो youngsters को who are aspiring to be the next Sameer Wankhede? मैं यही कहना चाहूंगी, इट्स एवरीथिंग वर्थ इट. आप प्लीज बनिए, क्योंकि इस देश को ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है. जब आप लोग ज्यादा होंगे संख्या में, तभी इस देश में बदलाव आएगा. और जनता है सपोर्ट करने के लिए, और जनता हमेशा चाहती है एक राइटियस ऑफिसर, और स्पेशली अभी की जनरेशन है वो तो चाहती ही है कि अच्छा एक कोई नॉन करप्ट बंदा आए. हमको प्रेशर्स आएंगे, हमको पॉलिटिकली भी प्रेशर्स आएंगे. You have to play it smart and just go forward. पर मैं जरूर कहना चाहूंगी, be honest and please join the force. It's everything worth it. It's absolutely beautiful to be a serviceman and also a serviceman's wife. I'm so proud, and so please go ahead and be the best version of yourself. Perfect. I want to be mindful, guys. So last ke few, I would encourage you to make it short and sweet. She's already spent a lot of time. She has all, as we all can see, बहुत ही busy day रहता है आजकल तो वैसे ही. All thanks to again, I don't want to be disrespectful to Nawab, but Nawab जैसे लोगों की वजह से the life has and the amount of time she's spending on social media has also increased. So let's make it short and sweet. Kaizad, please go ahead next. Hello, Kranti ji. My name is Kaizad, and I'm really happy that I could connect with you. And thanks, Varun, for giving this opportunity. Sure. Well, Kranti ji, I just want to say one thing, that Sameer sir is an inspiration for all of us and for all SSRians, and we stand rock solid with him. You need not worry. And these days, even I have been, giving this so-called minister left, right, and center, and I hope we can, get this issue sorted ASAP. And I just wish you all the best. And please don't, lose your heart. We are all with you. Thank you, Thanks, Kaizad. Varun. Thank you, Kaizad. All right. Simi ji, please go ahead next. Hi, namaste. Hello, everybody. Point one, thank you, Varun. I'm always trying to follow your footsteps, hopefully. And I'll be there with you, that any kind of protest. I'm kind of a neighbor here. Point two, which is very important. Sameer ji ke pitaji ne jo alag-alag baatein ki hain, I was so amazed and happy, excited. He spoke with such confidence and honesty.
एंड फ्रैंक, बहुत ही फ्रैंक थे. तो आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. तो समीर जी के पिता का ऐसा सपोर्ट हो और सोच है तो समीर जी का भी वैसा ही होगा. और तीसरी छोटी सी बात, 2 लाइन बोलूंगी मैं, और साईं बाबा का है, और थोड़ा अच्छी, आई मेक इट शॉर्ट. जगी हाँ धन्य में झालो, जगी हाँ धन्य में झालो, गुरुचे नाम घेऊनी साई हे, नाम बाबांचे साई हे, नाम बाबांचे लोक हो घेती वंदोनी, जगी हा धन्य मेरा. मेरे पिताजी, मेरे बाबा और मेरी मम्मी भजन गाती थी, तो मैंने सीखा. मराठी खास आती नहीं है, तो एक्सक्यूज माय प्रोनाउंसिएशन. बस इतना ही. थैंक यू क्रांति जी फॉर कमिंग एंड लिसनिंग, एंड वी आर ऑल विथ यू. थँक्स. थँक्यू. फार सुंदर होतं भजन. आणि इथे जे पण मराठीमध्ये पण उपस्थित आहेत, जे लिसनर्स, त्या सगळ्यांना माझं खूप खूप प्रेम आणि खूप खूप आदर. सगळ्यांनाच, मराठी बांधव पण माझे जे आहेत ते, आणि त्याचबरोबर अमराठी जे आहेत त्यांना पण. आणि तुम्ही असाच सपोर्ट समीरजींना करत राहा. मी वारंवार येईन तुम्हा लोकांना इथे भेटायला. आय कम व्हेरी ऑफन नाव, अँड आय लव्ह यू गाईज. आय हॅव टू साइन ऑफ नाव, अँड आय सी यू गाईज सून. गॉड ब्लेस यू ऑल, and let's fight this together. Let's fight this. Thanks. Thank you, Kranti ji. Take care. Good night. Bye. Thank you. Bye. All right, guys. Like you heard it, she had to leave, but we love all of you to continue speaking, and we'll take this message forward to her. So please go ahead. Akashvi ji, please go ahead. धन्यवाद. नमस्कार. जय जवान. नमस्कार. आप जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केवल एक मैसेज है, आवाज कीजिए. आज आवाज नहीं की तो कल को अस्तित्व नहीं होगा. आपको कल को जीना है तो उसके लिए आज आवाज करनी पड़ेगी. इसके अलावा मेरा कोई मैसेज नहीं है. भैया अपना ध्यान रखें, अगली पीढ़ी को कुछ सच बता के जाएं. अपनी पीढ़ी के साथ सच बोलिए, उनको सिखाइए. यही आपको प्रयास होना चाहिए. जय हिंद, जय भारत. मेरा कोई मैसेज नहीं है. आप सभी को नमस्कार. Namaskar. Thank you, Takeshri. All right, Dayanand, please go ahead. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू वरुण. आपके कारण आज क्रांति मैम को सुनने मिला. और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. और मैं बस इतने ही कहना चाहता हूँ कि मैंने तो पहली बार ऐसा कोई ऑफिसर देखा है जो मुंबई में ही आके इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले. वरना मैंने तो नहीं देखा कि कोई इनके अगेंस्ट कभी एक्शन लेता था. तो जैसे एक ऑफिसर की ड्यूटी होती है ऑनेस्टी और ब्रेवरी के साथ अपनी ऑफिसर को जो इतनी हिम्मत दिखाता है अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने के लिए, तो बस इतना ही कहूंगा कि सभी लोग सपोर्ट. आपकी आवाज कट रही है दयानंद जी. आपकी आवाज कट रही थी दयानंद जी. I don't know if anybody can hear him. Okay. Okay. I think we cannot hear you. Oh, he dropped off or something. Tanushree, please go ahead. हेलो. हेलो, गुड इवनिंग. आज थैंक यू वरुण सर. आज आपकी वजह से मैम को सुनने के लिए हमें मिला. मैम जो कुछ भी कह रहे थे मैम के साथ बात करने के लिए. मैं बहुत देर से यूट्यूब पे थी, पता चला कि मैम ट्विटर पर है. चलो ठीक है. बट मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है जो एक ऐसा सच्चा इंसान हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, और बॉलीवुड में से या फिर मुंबई महाराष्ट्र में रहकर इतने सारे बड़े बड़े लोगों के बीच रहकर उनमें कोई डर नहीं है. सिर्फ वो ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए उनके ऊपर रोका डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रुक जाए, अपने कामों को करने के लिए बंद कर दे. लेकिन सर, समीर वानखेड़े सर एक सच्चा सिंघम है, सच्चा फाइटर है जो कभी नहीं हार मानते और हार मानेंगे भी नहीं. तो मेरा यही कहना है कि सर जो कुछ भी कह रहे हैं
कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम सब सर के साथ हैं। हम हमेशा सर को सपोर्ट करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे। और सर के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है, इसका कोई भी मायने नहीं है। और आज की तारीख में तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सर जो कुछ भी करे ईमानदारी से करे और एक अच्छा काम करने के लिए, सच्चा काम करने के लिए जिगर चाहिए, जो हिम्मत चाहिए वो सर में है। जो कुछ भी सर कर रहे हैं मैं उसको हमेशा सपोर्ट करती हूँ और आगे भी करूंगी। बस इतना ही कहना था। सर आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ है। आपको कुछ नहीं होगा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये फालतू की बात सिर्फ आपको रोकने के लिए, आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए, पर आपको रोकना नहीं है, डरना नहीं है। बस आगे बढ़ते रहिए निडर के साथ, हम सब आपके साथ है। थैंक यू। Perfect. Thank you so much. All right, Amarjeet ji, please go ahead. हेलो बोले प्लीज गो अहेड। मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं समीर सर से मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि ये जो बी टाउन के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके नकाब को सामने लाए हैं। नहीं तो इससे पहले कोई बंदा ही नहीं था कि इनकी नकाब को हमारे सामने ला पाता था। और सब हम सब इनके साथ खड़े हैं, इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनके पीछे जो भी एग्जाम लगाए जा रहे हैं सब बेबुनियाद है। मैं इनको अपने दिल से सलाम करता हूँ। थैंक यू अमरजीत जी, थैंक यू। हम सब भी सलामी करते हैं इनको। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, चेतन प्लीज गो अहेड। Thanks for arranging this session here. जी की बात है, तब परिवार खड़ा है और जब परिवार खड़ा होता है ना तो उसका कोई कुछ बाका नहीं कर सकता, बाल भी नहीं इम्पोर्टेंट है अपना फैमिली। ओके, आई डोंट नो। हाँ चेतन, आप म्यूट हो गए थे, प्लीज गो अहेड। हाँ सुन रहे हैं आप? यप। तो साथ जो है उनका पूरा परिवार खड़ा है। जब परिवार साथ में रहता है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, पहली चीज। बिल्कुल। ऐसा है कि अभी आप लोगों को पता होगा कि जो नवाब मलिक है उन्होंने फिर से एक फैमिली पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। देवेंद्र फडणवीस, उनकी जो बीवी है, उनपे भी उन्होंने आरोप करना शुरू कर दिया। तो अभी ये उसका ही खुद गहराई में जाके डूबेगा और मरेगा। तो मुझे लगता है कि जो हॉनेस्ट है समीर जी, तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं। उनके साथ पूरा महाराष्ट्र खड़ा है, आम पब्लिक खड़ी है। और इस तरह के मामले में उन्होंने सिर्फ अभी खुल के काम करना चाहिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं। थैंक यू। Thank you so much, Chetan ji. All right, Chandan ji, please go ahead. जी, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। और सबसे पहले मैं बस कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छा और प्यारा लगता है कि आप सभी देश के युवा आज हमारे देश के सबसे ऑनेस्ट ऑफिसर समीर वानखेड़े सर के साथ खड़े हैं। और ये एकता और ये जज्बा हम लोगों में दिखानी चाहिए। हम लोगों ने आजादी नहीं देखा था, आजादी के लिए हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उस आजादी को बचाने के लिए हम लोग लड़ सकते। आप और हम मिलकर अगर संगठित हो जाए, यूनिटी बना ले, तो दुनिया की कोई भी ताकत, ये मुट्ठी भर के लोग होते हैं, ये नवाब मलिक जैसे लोग मुट्ठी भर के होते हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया में, अपने आस पड़ोस में, हर जगह समीर सर के बहादुरी का बखान करेंगे कि कैसे एक अकेला ऑफिसर, आप लोग दिल से बोलना, क्या एक साल पहले आप लोगों ने, कितने लोगों ने एनसीबी का नाम भी सुना था? सुने थे आप लोग? मुझे लगता है 70% लोग नहीं सुने होंगे। लेकिन एक अकेला ईमानदार अफसर आता है और पूरे देश ने ही दुनिया को बता दिया कि इंडिया की एनसीबी कितनी अच्छी काम कर रही है ड्रग्स फ्री नेशन बनाने के लिए। उसका श्रेय किन्हें जाता है? हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर, भगत सिंह जैसे ऑफिसर, सुभाष चंद्र बोस जैसे ऑफिसर, समीर वानखेड़े सर। इसके लिए हम लोग क्यों नहीं आगे आए?
अरे आज अगर आप लोग साथ नहीं देंगे ना समीर सर को, दुनिया में कभी भी आपका इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कोई ईमानदार अफसर आपके लिए लड़ाई करने के लिए आगे नहीं आएगा। अर्नब जी के समय में भी हमें धोखा खाया, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोगों ने उनको दिल से साथ नहीं दे पाए। और एक ईमानदार पत्रकार को, चूंकि वो सवाल पूछ रहे थे, सुशांत की हत्या कैसे हुई, पालघर में साधुओं की हत्या कैसे हुई, सरकार से सवाल पूछना पत्रकार का फर्ज था, लेकिन उनको जेल में डाला गया बेवजह के आरोप लगा के। आज वही चाल, वही साजिश फिर से रची जा रही समीर सर के साथ। लेकिन वो भूल रहे हैं कि समीर सर सेंटर एजेंसी के ऑफिसर हैं और आज के समय में अब वो सरकार नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर समीर सर इतना बड़े आदमी पर एक्शन ले रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सेंटर पावर का इनके ऊपर सहयोग है। उन्होंने इनको फ्री हैंड दे रखा है कि आप ड्रग्स फ्री नेशन बनाओ। तो ये तो मुझे विश्वास है कि मोदी सर के रहते हुए समीर सर को कुछ नहीं होगा। लेकिन हम पब्लिक का क्या है, हम पब्लिक जब तक, सरकार को भी तभी सपोर्ट मिलती है जब पब्लिक किसी अफसर के पीछे खड़ा हो जाए चट्टान की तरह। अगर आप और हम सब चट्टान की तरह ना समीर सर के लिए एक यूनिटी बना लेंगे तो ये 2 कौड़ी का भंगार सेठ, कचरा सेठ हमारे हीरो को कुछ कर सकता है क्या? और अपना पंगा जिससे लिया है ना, अब आएगा खेल में मजा। पिक्चर तो अब शुरू हुआ, अब उसने पंगा ले लिया राजनीतिक आदमी से, देवेंद्र फडणवीस से। अब देखो कैसे आता है खेल में मजा। अनिल देशमुख ना बन जाए वो तो अब बता देना, बहुत जल्द वो अनिल देशमुख बनने वाला है। क्योंकि राजनीति जब तक आप समीर सर पे लगा रहे थे तब तक तो राजनीतिक आदमी डायरेक्ट सपोर्ट में, फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा था। अब देवेंद्र फडणवीस पे लगाया, जाहिर सी बात है वो लोग फ्रंट फुट पे खेलेंगे। तो इस बीच में हम लोग ये नहीं बोले कि आप पॉलिटिकल सपोर्टिंग बीजेपी के हो या ना हो, लेकिन उस टाइम में आप लोग उनके कमेंट्स में लिखो कि सर इस ऑफिसर को, जब समीर सर को जब इन्होंने टारगेट किया, अब हद से ज्यादा हो गया, फिर से एक महिला पे टारगेट किया, आप इसे सबक सिखाओ। बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सभी हर तरीके से, हर मीडिया में, सोशल मीडिया हो या अपने आस पास में कोई भी हो, सबके पास जाके समीर सर के सच्चाई ईमानदारी को देखो। जैसे हम लोगों ने चुनाव आयोग में TN सेशन का नाम सुना था, वैसे इनका नाम सुन लिए किस प्रकार से एनसीबी होती है। धन्यवाद, आप सभी को बोलने का मौका दिया और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया सुनने के लिए। Thank you so much. All right, Prateek ji, please go ahead. Thank you, Chandan ji, for sharing. हेलो सर, हेलो। Yes, please go ahead. बोलें आप। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए, समीर सर हमारे प्राइड है, पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत में, पूरे भारत से उनको सपोर्ट है। ऐसे भी कोई भी नेता आके ऐसे हर रोज सुबह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब डॉक्यूमेंट सब एक्सपोज कर रहा है, ये सब टॉलरेबल नहीं है। वो एक आदमी एनसीबी का जोनल डायरेक्टर है, उसने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। कोई भी आदमी आके उसके ऊपर ऐसे असैसिनेशन करता है और बाकी फिर इनके पीछे जो लोग हैं, मैं बहुत सारे अकाउंट्स देखिए, अब मैं किसी का नाम एक्सपोज नहीं करूंगा, बट बहुत सारे इनके सपोर्टर्स आते हैं, फिर ये अलग अपने ट्वीट करते हैं। एक आदमी जो उनके बहुत से बाहर था, एनसीबी का जोनल डायरेक्टर, उन सब पे कमेंट करते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम पूरा महाराष्ट्र, पूरा यूथ समीर सर के साथ है। बहुत बढ़िया। Thank you so much, Prateek. All right, Mohinder ji, please go ahead. Mohinder Singh. Yes, hello. Actually, this is Alka Singh. I'm Mohinder's wife, and I've been very involved with what has been happening with Sameer Wankhede ji and Kranti ji. Sure. We live in America, in Raleigh, and I have been absolutely blown away with the patriotism and nationalism and fervor of courage and resilience that Sameer ji is showing amidst such torrential onslaught by such demonic forces. So I was just very, very inspired to today convey my message to Kranti ji. I wanted to say, that I also heard Anuradha ji. I'm also the daughter of army personnel for a couple of generations now. And one thing I know for sure with unshakable faith, and that is that when one's parents lead a life that is so foundationally situated in courage and truth and honesty,
those benefits flow down to generations of the family. And when corruption and deceit live and prosper in a family, then even at that time, it may seem to some of us like, oh gosh, look, they're corrupt and still they're just fine. In the long run, that never spans out. So more power to Kranti ji. She's definitely the Shakti that keeps Shiv Swaroop Sameer ji going. And one thing is for sure, that people like Nawab Malik, they will use Kam, Dam, Dand, Bhed, everything to try and malign Sameer ji's character and his honesty, and nothing is beyond them. So when we say, oh, how can they say this to women and that, they will say whatever they want to say to try and malign him. So anything is expected from people who have no character and whose only dharma in life is accumulation of wealth by hook or by crook. And it is not just Nawab Malik. We all know that there is a slew of underground and underhanded people who are nudging him on, and whose mouthpiece he has become. Right. Just because this Aryan Khan was incarcerated for some time. So Kranti ji, as her name suggests, will bring a revolution, and women have amazing power, amazing Sahaj Shakti, amazing patience, and we are so proud of her. And please do tell her to continue coming on media, because when she comes on media and when she speaks, it communicates her truth, it communicates the honesty of her husband, and her husband, being a government employee, cannot voice the truths as candidly as she can. But I think that is so important that she's out there and showing her face and showing her fervor. And the same thing goes for his father, because I think in all nationalist and patriotic Indians, no matter where we are in the world, one thing that still lives and thrives in us is the fact that, we understand truth, we understand honesty, and nothing and no one can ask the sun its authenticity to shine. And that is what Sameer ji is for the country. He's India's jewel, he's Bharat Ratna actually. And I do hope and I do appeal to the central government to make sure that he is given all the support possible, because he is leading a wonderful war. In America, we have seen they have made all these useless drugs legal just because of the money that it brings into the states and the cities, and it is causing havoc in the youth here. So it is so wonderful that we still have stern laws in India about drug peddling and drug consumption, and it is so important that it be upheld, because I am 100% sure, as are many like me, that the horrible Bollywood culture, actually druggywood culture that is there in Mumbai, that if given a chance will say make certain things legal, just like they are in certain other countries of the world. So this is an uphill battle, but all battles are uphill. And whenever one stands for truth, it is never an easy battle. So more power to them, and all our prayers and positive vibrations to them. And thank you, Varunji, for giving me this opportunity. This is my very first time being able to express my emotions, because I feel extremely strongly about this, though I'm sitting almost 7 oceans across. I know, and thank you. Very well put, Alka ji, right? Alka is, yes, yeah. Yes, my name is Alka Chauhan Singh, and I am a daughter of an army officer, and even my maternal grandfather was in the Indian Army. So I feel very strongly about honest officers, and I've seen my mother, how my father used to be posted in field areas for years at a stretch, and my mother reared 3 kids, and all 3 of us feel strongly about our cultural roots, our traditional roots, and Sanatan Dharma and the beauty of it, because we have traveled the world and we have seen how much depth and richness we have in perception, which is missing in usually those who have been brought up in Abrahamic faiths, because we see the entire universe as one. We see that amazing universal consciousness pervading each and everything, be it trees or plants or animals or humans. So, we have this beautiful aspect of our personality of encompassing and embracing everybody, irrespective of what the outside is. But that is missing in the world. So being in India and, having the beautiful vibrations of thousands of years of tradition, culture, and
rishis and munis' knowledge and wisdom. It is an amazing dharohar, and we must preserve it. Every individual who has been blessed to be born in a family that believes in it must uphold it. Very, very well said, and I agree 100%. Really, really proud that we could hear you, Kranti ji, Anuradha ji, a lot of such people who are proud of their heritage and proud of what their parents, grandparents, everybody's been doing for the country. This is really a Yes, very, very and positive. Varunji, Varunji, and Varunji, in Kaljug today, it is an uphill battle. Honesty, integrity, self-respect. This is an uphill battle, especially like Saint Aurobindo said, that the last demon will fall at my mother's feet. So India is the battlefield for a lot of demonic forces right now, and unfortunately, in Maya Nagari, only Maya is dominating, and they'll do anything for money. And we see that. So I think what we all need to do, like we have done here, is we boycotted all Bollywood movies. We refuse to see them, Right. Until and unless they are made by some patriots like Kangana Ranaut or somebody, right? Otherwise, we don't see them. That is what we need to do. That is what we need to inspire our children to do. That is what these ads. So you have to hit them where it hurts, which is their pocketbooks. Right. Until and unless their pocketbooks are impacted, talks about ideals and principles will not impact them, because they are not moved by inspirations like that. So Kranti ji coming on media, talking, and she has such honesty and forthrightness in the way she speaks. You know when honesty speaks, and you know when a dishonest person speaks. And this Nawab Malik cannot be stopped, because he has the likes of all the Khans and all of them probing him to say whatever they want to say but can't say openly. So he has a slew of demonic forces behind him. We all know that. It's not just a Nawab Malik. There are lots of Nawab Maliks in India and outside India right now. So true, so true. Really appreciate that. Thank you so much, Alkaji. Look forward to hearing you more often. You. All right, thanks. Thank you for the opportunity. Thank you, Varunji. My Jai pleasure. Bharat, Jai Hind. Jai Hind. All right, please go ahead, Dave. Hey guys, Sat Sri Akal Varun ji. Sat Sri Akal ji. मैं I think late शामिल हुआ था, and I probably wouldn't want to take a lot of people's time, but I do have a few things to share. Sure. I wanted to ask Kranti ji before she left, and my chance got, and maybe you could ask her, because that would be very comforting for people out there. कि उन्होंने बोला कि समीर जी की फिजिकल सिक्योरिटी के लिए कमांडोज हैं, वो सब है. So yeah, that all can be taken care of, right? But she also mentioned how stressful or stressed he is, trying to go around and do all these people. And I don't know how in India, like NCB, they are big organizations, right? Do they have a counselor? Like, how much difference it can make? And so there's something if you could ask and convey, like, does he have those kind of help? Where, you know what I mean? Because that's a big fight. Physical fight is one thing. Mentally, you have to, and he is a very strong person. From what I can say, and the family is so strong, and people out there supporting. But that's something I would like to ask Kranti. And the second thing I have is, like in my half century of my life, how many people before we got independence, there were so many inspiring people, right? You can name, a lot of people can name so many people. Bhagat Singh, Rajguru, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, so many people. And after we got independence, how many people you can really, I mean, of course, there are people who are fighting at the border, there are no names, there's no name, but the sacrifices that they have made. But how many instances you can say, like, you were really proud as an Indian, right? I mean, cricket, maybe Sachin Tendulkar when he hit the century against Australia, or the last time I could remember when I was very proud, before we hit Pakistan inside their boundary was when we had this, Atal Bihari ji did the second nuclear test. I still remember I was, driving down a road, and as soon as I heard the news, I was so proud of. And then you hear about, people like
Sameer Wankhede, who's, forget about what he's doing or not doing. He's doing a job. You don't have to say. Everybody knows that. But he's inspiring so many people. I hope, and imagine how lethal he's gonna be. He's doing right now the front work, but watching him, the junior officer, the people, the department, like how much even in person, NCB, a person can make a difference. And if he's inspiring those people, imagine when those people come and fight in this system, like him, that would be, a great. But that's it. I mean, I have a lot of thoughts, but people are not here to listen to me, so I'm gonna stop here. No. But Thank you for sharing your thoughts and views. I completely agree. We have not seen many people like Sameer in the last few decades, I would say. They're very few, very rare. And like I always say, right, he's a rare breed. Kranti ji ne bhi yahi bola tha. He's a rare breed. We don't find men like Sameer Wankhede that often. All we can do is we can just show our support. We can show our love for what he's doing, and not just him, his team as well. So हम लोग यही कर सकते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आकर stand strong with them, handle all these distractors, haters अपने level पे, and let them focus on their job, because what they can do, uh, we can't even do that. हमारे पास वो ना position है, ना power है, ना capacity है. So all we have is this support that we can give them from the back end. And I think if we are able to do this, they will be able to perform their job. Of course, your distractors, बहुत सारे Nawab Maliks हैं around us. They will continue to mushroom every now and then because they have a different agenda. All we have to do is जितने we have to make sure we cut them out from the root, and move them out. So I think hats off to them, but at the same time I would say hats off to all the supporters, everybody who's standing strong. Kranti ji ka jaise message aaya hai ki she will be doing more of these spaces, because I'll quote what she has written. She says, this is also very, very, very motivating for me, Varun. A support group always helps and works for them. So if she feels that by us coming here, speaking and showing our love and support to her means a lot to them, as a family as well, why not? हमें यहाँ आके support देने में, बात करने में, we have nothing to lose. Imagine the kind of risk these guys are taking. From a family perspective, they have two small kids. And with all this happening, end of the day, हमारी ऑफिस का ही स्ट्रेस कई बार हमारे बच्चों के ऊपर निकल जाता है, हमारा बहुत सारी चीजें. सो इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेस लेवल दे हैव, एंड स्टिल दे हैव टू गो ऑन with their normal life. So I think this is something which I'm really proud of. I'll not, there are very few things in my life where I stand and say, what, I have done something. This is again not something personally I have done. I've been very fortunate enough that I've been kind of asked to do this, and I will never stop. Chahe kuch bhi ho, whatever day, time she tells me, I will stand. And I encourage all of you. I'm really proud. बहुत सारे ऐसे लोग हैं. Sonal is here, Tripti is here, Shweta, Shifali, a lot of people. I can go on and on. I don't want to just take few names. Everybody is standing like a rock solid pillar for them. And I will encourage all of you to take this message forward, कि जहां पर भी समीर या समीर की फैमिली को सपोर्ट चाहिए, and it's just not Sameer is a name again. Anybody who is doing the right thing, anybody who needs our support, we should stand strong and we should continue to support them. All right, I'm going to take one last. यहाँ पर सौम्या जी हैं, please go ahead. उसके बाद we should definitely end this session and then we'll have another one. Yes. Thank you, Varun ji. नमस्ते सभी को. Namaste. मुझे बस यही कहना था कि ये सोशल मीडिया की ताकत है कि हम लोग टू वे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं. इसके पहले 10 साल पहले देख लीजिए, हमेशा न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में जो भी न्यूज़ आती थी, हम बस सुनते थे, पढ़ते थे, आपस में डिस्कस करते थे और छोड़ देते थे. लेकिन अब ये एक अलग तरह का रिवॉल्यूशन है. हम सब लोग पूरी दुनिया से एक साथ मिलके समीर जी के लिए खड़े हैं. कोई भी अन्याय होता है किसी के लिए, किसी के भी साथ हो, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं. हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं सबके लिए, सबके साथ हम एक साथ उठ के एक आवाज में बोल सकते हैं.
तो ये सोशल मीडिया ताकत है, हमको इसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे बाकी सबने कहा कि जब हम छोटे थे हमें नहीं समझ में आता था कि हमारे पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कभी डिस्कस नहीं करते। मिडिल क्लास फैमिलीज में तो हमेशा मतलब आपस में ही मम्मी पापा आपस में ही सब कुछ मनी वाइज या जो भी स्ट्रेस है करियर वाइज, दोनों मेरे पेरेंट्स ऐसे रेगुलर जॉब्स में है। तो SBI में मेरे फादर और मेरी मम्मी गवर्नमेंट ऑफिस में टीचर थी। और हमारे बड़े होने के बाद तब उन्होंने प्रमोशंस लिए और फिर तब जाके कहीं और गांव में ट्रांसफर हुए। तो आप सोच नहीं सकते कि एक छोटे से गांव में एक जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, वहां जाके रहे हैं। और वहां कितना उनके ऊपर प्रेशर था हर 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 स्टेप पे। कभी लोन लेना है किसी को और वो एक आ रहे हैं बैंक में, आ रहे हैं एक गन के साथ, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, एंड दे वोंट बेंड डाउन। नहीं, आप अगर सही कागज है, आपका सही वो है तभी देंगे, नहीं तो आप ठीक है। अब ये चलती भी है, गन चलती भी है करके धमकी मिलती थी। चलाइए, देखेंगे, अब जब तक लिखा हुआ है यहाँ दाना पानी लिखा है तब तक रहेंगे, नहीं तो जाएंगे। और हमको कभी नहीं पता चला, जब भी हम कभी ऐसे आते थे बीच में, कभी हॉस्टल्स में रहते थे, दिवाली पे या सेमेस्टर ब्रेक में आ रहे हैं, तब ये सब बातें मतलब सुन रहे हैं जस्ट फोन पे जैसे हो रही है, और हम लोग डर जाते थे, कहते थे ये क्या कह रहे हो, आपको क्या करना है, आप छोड़ो, आप या तो ट्रांसफर के लिए बोलो। कहते थे नहीं ठीक है, वो सब बोलते हैं ऐसे धमकी देते हैं, कुछ करेंगे नहीं, और कर भी दिया तो क्या है, अब तुम लोग को सारे हमने जितने संस्कार देने थे दे दिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाना था, बना दिया, एंड यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हम लोग का क्या है, ऐसा करके बोलते हैं। तो जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वहां पे यही सिखाया जाता है, और अब हमको समझ में आता है कि वो जो वैल्यूज है और जो एथिक्स है, मॉरल्स है, वी हैव टू कैरी देम फॉरवर्ड एंड वी नीड टू पास देम ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो आती हैं, बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं और सब लोग नहीं डिस्कस करते हैं। एंड 90% लोग बहुत ऑनेस्ट है, किसी भी उसमें हो, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तभी ये देश चल रहा है अच्छे से। और जो 10% है वो ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता, और पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, सब होता है। लेकिन जो ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है, और अपने देश के लिए मैं ये रिलीजन वाइज और कास्ट वाइज डिविजन्स में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन नेशन कम्स फर्स्ट व्हाट एवर इट इज। सो ये हम अपने और आगे की जनरेशन में हम बस कैरी फॉरवर्ड कर सकें और साथ दे सकें तो बहुत होगा। यही देश सेवा है जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बस इतना कहना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सौम्या जी, बहुत अच्छा मैसेज, और nation definitely comes first, period, before anything else. So thank you so much for saying that. All right, thank you. Second last person, Judy, I know you're back, so please go ahead. Uske baad Sonal is gonna end, but please go ahead. So yeah, I just thank you so much for giving me to jump in again. But I just want to, since everybody is here on this platform, I would just want everyone to hear this. Varun just said a little while ago that I'll say in Hindi also, क्रांति जी को मोटिवेशन मिलता है हमारी इस बात सुन के, पर ये मोटिवेशन मिलता है किसकी वजह से, दैट्स द थिंग। कल हमने एक कोई स्पेस पे गए थे, वरुण नेवर स्पीक्स लाइक अ पॉलिटिशियन एंड नेवर गिव्स अ चांस टू एनीबॉडी, इट्स नेवर हैपेंड दैट वे। सो आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी वरुण टू थैंक यू फॉर गिविंग अस द वॉइस टू स्पीक टू क्रांति जी, and because of that the motivation she is getting, so that she is hearing the common man's voice. I would like you to repeat that same motivation phrase. I know you won't repeat the compliment phrase to you, but repeat the motivation phrase in Hindi also to the people. And this is what we require. See, I know Sonal also has said that we are all leaders here. We don't require leaders. But even those who shows the path, who raises the first voice, जो पहली आवाज उठाता है, that person also motivates us. And that's exactly what Varun Kapur is doing here. So thank you again, Varun, from the bottom of my heart for giving us this opportunity to speak to Kranti ji, so that we in turn motivate her and her family. And I have sent you a WhatsApp message, but I will tell it here too. We forgot to wish her a very happy Diwali to her and her family. And I say
in Hindi again. दिवाली का हर दिया जो आप लोग इस दिवाली पे जलाएंगे, I don't know, I hope that this diya burns all the evil which is in this system, which is going against Sameer ji, and Sameer ji and his family have a very, very shubh Diwali. This is what Varun, please convey it from all SSRians to them. Thank you. Sure. Thank you so much. All right. So as I said, we're gonna end this. We might have another one later, guys. Abhi nahi, but I would love Sonal to please kind of say a few things, and then we'll try to finish it off right now. Thank you, Varun. Thank you for giving us this opportunity to speak and interact. It has been a very anxious kind of a time period where कुछ होता है पता नहीं चलता, but now with Kranti ji coming and even sharing her vulnerabilities, her frustrations, and we making it our own and we fighting together has completely different flavor to the fight. So we really, really appreciate, and what Judy says was spot on, and she really gave a very beautiful message about Diwali. And we are all together. We are a family, Sameer and all of us have become such a tight knit community, and we are a family, Kranti and all. And we will pray for each other. And thank you, Sameer Kranti and family for fighting this fight for all of us. We salute you and we are super grateful to you. And thank you so much, Varun, for making this happen and having this interaction with Kranti ji. We really appreciate it. Thank you. Thank you. Like I say, I'm definitely blessed. That's all I can say. That they chose this as a way to communicate and connect with people. और मैं ये करता रहूंगा जैसे कि मैंने बोला एक बार फिर I'm going to repeat what Kranti ji just said. She will definitely let me give me all the time slots, anything whenever she wants to come in. She will speak with all of us, but it is also very motivating for me, Varun. So this is what she's saying, that not only it is good, a great thing for us, it's actually working the other way around as well, that having this just a support group always works. Having that support group from her perspective, from Sameer's perspective, also hearing out people how they feel about Sameer, about the NCB team, I think is all very motivating. So let's all continue doing this. This is the least we can do, guys. यहाँ पर कोई fundraiser नहीं चल रहा, यहाँ पर कोई campaigns nahi chal rahe, or all we are doing is coming here, standing, hearing her out. I'm really glad even she shared some of her private and internal stuff as well, which we might not be aware of. मुझे भी नहीं जैसे चीजें कुछ पता, आपको भी नहीं पता, वो हमें सुनने को मिल रही है कि कैसे the entire NCB team is standing rock solid for Sameer, for the entire team, his team members, even the person who was driving her, how they feel. These are the things that definitely make a lot of difference for all of us. So really very proud of this family, and let's all keep them in our prayers. And jaise Judy ne kaha, Sonal ne kaha, auron ne bhi, we will pass on the Diwali wishes as well to them. It's a beautiful family. I just wish they had not to kind of go through all this nonsense that they're going through, but eventually this shall pass. ये सब खत्म होगा, and then at that point of time we would love to kind of have a great time with Sameer, with Kranti ji, with the entire family, and wish them more success and more power and more love. So keep this coming, keep this movement on, guys, and keep on supporting Sameer and the entire Wankhede family. We will do more sessions. जैसे मैंने कहा, जिनको अभी थोड़ा शायद opportunity नहीं मिली, we'll give you opportunity next time as well. But also be very very mindful that वो अपना time निकाल रही हैं. This is like almost night को वो करती हैं, so she also has to take care of kids and family. So we should all be very very mindful of that as well. So once again, take care. Thank you everyone, and good night. We will talk soon on Spaces very soon. Take care. Bye bye. Thank you. Bye. All right, guys. People on YouTube, this was a great session. I am going to end this session. जैसे मैंने अभी कहा, space पे भी, we will continue to have more of these sessions whenever we can, whenever Kranti ji wants us, whenever Sameer wants us to, or he wants to speak, we will have him. He was not at home, he was traveling, and that's why he could not join.
So next time he is, Kranti ji will ask her to do it, ask us to do this session. We will hopefully have Sameer also say a few things, a few words with us. All right, I'm going to end this session. Thank you so much for all your support. Keep this support for Sameer and the entire Wankhede family. Really proud of this man and really proud of the entire family. Take care. Jai Hind, Jai Bharat, and we'll talk soon. Bye now.